Extrusion process parameter. There are 8 type extrusion process parameter affect. First is the yield strength of the work material. Second one is the extrusion temperature, reduction ratio, shape factor, and die characteristics, lubricant use, ram speed, and type of extrusion. These are the extrusion process parameter. In there are parameters known as yield strength of the work material, extrusion temperature, reduction ratio, shape factor, die characteristics, and lubricant use, and also a ram speed and type of extrusion. Whenever we discuss what is the yield strength of this work material, the yield strength materials being extruded affect the force required for extrusion. Non-ferrous metal with lower yield strength and can be extruded more easily than ferrous metals which have a higher yield strength. What is the extrusion temperature? In their extrusion temperature affect the yield strength and ductility of the material, and the increase in extrusion temperature cause a reduction in yield strength and increase in ductility, thereby leading to reduction in extrusion forces. This one first is the yield strength of work material, second is the extrusion temperature, and then is extrusion temperature, and third one is that is the reduction ratio. What is the reduction ratio? Reduction ratio for a given ductility, extrusion force increase with increase in extrusion ratio, and extrusion ratio can be to be used depends on the material being extruded for and extrusion temperature. And what is the shape factor? Yeah, CCD, that means circumscribing circle diameter. सेव फैक्टर क्या है? सेव फैक्टर यहाँ पे एक ऐसा पैरामीटर है जो कि डिस्क्राइब करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एक्सट्रूडेड सेक्शन की. सेव फैक्टर डिफाइन करता है रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ एक्सट्रूडेड सेक्शन इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ. सर्कुलर सेक्शन हैव द लोएस्ट शेप फैक्टर है, जबकि कॉम्प्लेक्स शेप जो होते हैं उनका हाई शेप फैक्टर होता है. सर्कुलर सेक्शन है हैव अ लोएस्ट शेप फैक्टर, जबकि कॉम्प्लेक्स शेप हैव अ हायर शेप फैक्टर. CCD या सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल डायमीटर एक अनदर टर्म है जिसका हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एक्सट्रूडेड सेक्शन. CCD is the diameter of smaller circle into which the extruded section will fit. Higher CCD or shape factor means higher extruding force. What is the die characteristic parameters? The characteristics of the die that affect the extrusion process are its shape or die opening. Extrusion process are its shape or die opening, and non-ferrous metals are extruded with flat dies, while conical dies are preferred for ferrous metal to control the extrusion process. Next parameter, that is your lubricants use. We discuss extrusion process parameter. There are 8 type extrusion process parameter: yield strength, extrusion temperature, reduction ratio, shape factor, die characteristics, lubricant use, ram speed, and type of extrusion. इन देर अवर डाई lubricant यूज. तो lubricants में जब बात करते हैं तो एक्सट्रूजन इन्वॉल्व हाई फ्रिक्शनल फोर्स और हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोवाइड करे गुड lubricant सिस्टम. lubricant यूज करते हैं फॉर हॉट एक्सट्रूजन पर्टिकुलरली शुड हैव अ लो शेयर स्ट्रेंथ और एज वेल एज अ हाई थर्मल स्टेबिलिटी के लिए. मोस्ट कॉमन lubrication का यूज़ करते हैं फॉर हॉट एक्सट्रूजन ऑफ स्टील, स्टेनलेस स्टील और अदर high temperature alloy is a powder glass coated on the surface of the billet. Circular glass pad जिसका हम यूज़ करते हैं kept to die entrance for lubrication of die surface, and glass pad melts under the working condition जो कि provide करता है lubrication to the die surface. Molten glass also हम act करते हैं as a thermal insulator जो कि reducing करता है heat loss through the walls. बात करते हैं फॉर नॉन फेरस मेटल्स द lubricant जनरली इज यूज्ड फॉर इंक्लूडिंग molybdenum, disulfide, lanolin, graphite, soap, tallow, etc. देयर आर नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज योर रैम स्पीड. इन जब रैम स्पीड, तो रैम स्पीड की बात करते हैं तो एक्सट्रूशन स्पीड डिपेंड करती है उसके वर्क मटेरियल पर. और अगर लाइट ओलाइज हैं तो मे बी एक्सट्रूड स्पीड जो होगी उसकी 0.05 मीटर पर सेकेंड होगी, जबकि कॉपर एलाइज और होंगे तो उसकी हाई स्पीड जो होगी इट मे बी एज हाई एज 4.50 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द रैम स्पीड. टू हाई एन एक्सट्रूशन स्पीड
can cause excessive heat generation, leading to lateral cracks in the extruded pieces, or higher speeds are used for steel, titanium, and high strength alloy. What is the type of extrusion? There are type of extrusion also we discussed, that is in addition to factor listed above, the extrusion force is also affected the type of extrusion, that is hot, yeah, cold, direct, yeah, indirect, as explained earlier. So these are the 8 extrusion process parameter we discussed: yield strength of the work material, extrusion temperature, reduction ratio, shape factor of, yeah, CCD, and die characteristics, lubricant use, ram speed, and there are type of extrusion. These are the